ऑफ मिशन ग्लोरिया बरबेना को तलब इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका का भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने आज अमेरिका के कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बरबेना को तलब किया। बैठक लगभग 40 मिनट तक चली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन कहते हैं, दृश्य अनुमान के अधिकारी 8 लोगों के लिए बेहिसाब थे। वह संख्या बदल सकती है। 2 को बचाया गया है, 1 चोट के बिना और 1 गंभीर स्थिति में, और खोज और बचाव अभियान उन सभी के लिए जारी है जो शेष है। जैसा कि हम बोलते हैं, अब तक सब कुछ इंगित करता है कि यह एक भयानक दुर्घटना थी। इस समय हमारे पास कोई अन्य संकेत नहीं है। यह विश्वास करने का कोई अन्य कारण नहीं है कि यहाँ कोई जानबूझकर कार्य किया गया है। हमारी प्रार्थनाएं इस भयानक दुर्घटना में शामिल सभी लोगों और सभी परिवारों के साथ हैं, विशेष रूप से अभी अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि उस परिस्थिति में हर मिनट जीवन भर की तरह लगता है। हम बहादुर बचाव कर्मियों के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी हैं जो तुरंत दृश्य में पहुँचे, और बाल्टीमोर के लोगों के लिए हम आपके साथ रहने जा रहे हैं जब तक कि यह लेता है। खोज और बचाव अभियान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाल्टीमोर बंदरगाह में जहाज यातायात को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है, और हमें जहाज यातायात फिर से शुरू होने से पहले उस चैनल को साफ करना होगा। यह मेरा इरादा है कि संघीय सरकार उस पुल के पुनर्निर्माण की पूरी लागत का भुगतान करेगी। बाल्टीमोर के लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं। An accident that happened in Baltimore this morning. At about 1:30, a container ship struck the Francis Scott Key Bridge, which I've been over many, many times commuting from the state of Delaware either on a train or by car. Been in Baltimore Harbor many times. And the bridge collapsed, sending several people and vehicles into the water, into the river. And multiple U.S. Coast Guard units, which were stationed very nearby, thank God, were immediately deployed along with local emergency personnel. And the Coast Guard is leading the response to the port, where representatives from the Federal Highway Administration, the FBI, Department of Transportation, the Army Corps of Engineers, as well as Maryland officials and Baltimore Police and Fire, are all working together to coordinate the emergency response. Officials at the scene estimate 8 people were unaccounted for were unaccounted for. That number might change. 2 have been rescued, 1 without injury, 1 in critical condition. And the search and rescue operation is continuing for all those remaining as we speak. I spoke with Governor Moore this morning, as well as the Mayor of Baltimore, the County Executive, both United States Senators and the Congressman. And my Secretary of Transportation is on the scene. I told them we're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. I mean all the federal resources. We're going to rebuild that port together. Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional activity. Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. Our prayers are with everyone involved in this terrible accident and all the families, especially those waiting for the news of their loved one right now. I know every minute in that circumstance feels like a lifetime. I just don't know. It's just terrible. We're incredibly grateful for the brave rescuers who immediately rushed to the scene, and to the people of Baltimore. I want to say we're with you. We're going to stay with you as long as it takes. Like the governor said, you're Maryland tough, you're Baltimore strong, and we're going to get through this together. And I promise we're not leaving. Here's what's happening now. The search and rescue operation is our top priority. Ship traffic in the Port of Baltimore has been suspended until further notice, and we'll need to clear that channel before the ship traffic can resume. The Army Corps of Engineers is on the spot and is going to help lead this effort to clear the channel. The Port of Baltimore is one of the nation's largest shipping hubs, and I've been there a number of times as a senator and as a vice president. It handles a record amount of cargo last year. It's also the top port in America for both imports and exports of automobiles and light trucks. Around 850,000 vehicles go through that port every single year.
and we're going to get it up and running again as soon as possible. 15,000 jobs depend on that port, and we're going to do everything we can to protect those jobs and help those workers. The bridge is also critical for travel, not just for Baltimore, but for the Northeast Corridor. Over 30,000 vehicles cross the Francis Scott Key Bridge on a daily basis. It's virtually, it's one of the most important elements for the economy in the Northeast and the quality of life. My transportation secretary is there now. As I told Governor Moore, I've directed my team to move heaven and earth to reopen the port and rebuild the bridge as soon as humanly possible. And we're going to work hand in hand with the support of Maryland to support Maryland whatever they ask for. We're going to work with our partners in Congress to make sure the state gets the support it needs. It's my intention that the federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge. And I expect the Congress to support my effort. This is going to take some time. The people of Baltimore can count on us, though, to stick with them at every step of the way until the port is reopened and the bridge is rebuilt. यूपीटी द्वारा मुंबई में 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस नेता संजय निरुपम कहते हैं, शिवसेना को अत्यधिक रुख नहीं अपनाना चाहिए, इससे कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। मैं हस्तक्षेप करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर नहीं तो पार्टी को बचाने के लिए गठबंधन तोड़ दें। शिवसेना के साथ गठबंधन का फैसला कांग्रेस के लिए आत्मविनाशकारी साबित होगा। अगर बाला साहब थोराट जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई, तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है। और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। में आए सिद्ध संत का गंगा स्नान से पहले अग्नि स्नान करते देख बीबीसी के रिपोर्ट की नींद उड़ गई। जो बीबीसी दिन रात हिंदू धर्म संस्कृति को अन्य धर्मों के अपेक्षा हमेशा नीचा दिखाता रहा, वही बीबीसी कल इसे अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया। ये है हिंदू धर्म और योग की शक्ति, धर्म एक है, बाकी पंथ मजहब है, सनातन धर्म की जय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।